बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो था फेसबुक फॉर बिजनेस। उससे पहले हमने देखा कि अपने फेसबुक के पेज को आसम और वाव फैक्टर वाला कैसे बनाते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है बेसिक्स ऑफ फेसबुक एड्स। So Facebook ads are basically used to get your brand in front of people and share your story and value proposition. So your goal with Facebook marketing is to create, first one is awareness, second is consideration and third is conversion. So आप जब भी देखेंगे कि आपका Facebook मार्केटिंग का गोल क्या है, या आप अवेयरनेस कर रहे होंगे, कंसिडरेशन कर रहे होंगे, या आप कन्वर्जन कर रहे होंगे। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट और योर ब्रांड to the world via Facebook ads. So create a story around your product and brand so that people can remember that. So, and the consideration is offer a value proposition that attracts potential customers to consider your brand or product. And conversion the is making the sale and building ongoing customer loyalty, and that will keep customers buying again and again. So ये तीन कुछ फेसबुक मार्केटिंग के गोल्स थे जो बेसिक हैं फेसबुक एड्स की, कि हम फेसबुक एड जब भी यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमें इन तीनों गोल्स में से कोई एक गोल्स चूज़ करना पड़ता है। अच्छा, आइए सीखते हैं कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए कैंपेन कैसे क्रिएट होती है। सो विद द पावर ऑफ फेसबुक एड्स you can reach people based on their location, their age, their gender, what their interests are, and what action they're taking on your website and application and much more. So करेंगे क्या? आप अगर यहाँ देख रहे हो तो सबसे पहले आपने इस लिंक को नेविगेट करना है business.facebook.com/admanager। फिर आपने जाना है एड मैनेजर में चले गए, फिर आपने जाना है कैंपेन्स में। कैंपेन्स में ग्रीन कलर का बटन है क्रिएट, आपने वहां से जाके फेसबुक कैंपेन क्रिएट करनी है। उसके बाद जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक मार्केटिंग के कुछ कैंपेन के ऑब्जेक्टिव ओपन हो जाते हैं। आप अवेयरनेस चाह रहे हैं, आप कंसिडरेशन चाह रहे हैं, या आप कन्वर्जन चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इन दिस पॉपअप सिलेक्ट द क्रिएट न्यू कैंपेन ऑप्शन। अच्छा जी, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन के तीन फेसबुक ऐड के ऑब्जेक्टिव्स आ गए, कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स आ गए। उसके बाद सिलेक्ट द टाइप ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव यू वांट टू रन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ फेसबुक ऐड कैंपेन। हमेशा माइंड में रखिएगा, क्रिएटिंग न्यू कैंपेन, एंड उसमें अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन आ गई। सो दिस इज योर द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग फेसबुक ऐड कैंपेन। एंड whether if you want to get more people into your physical store or website or your Facebook engagement, Facebook has a campaign objective for every scenario and type of ad you could ever want. आप ब्रांड अवेयरनेस करवाना चाह रहे हैं, आप रीच बढ़ाना चाह रहे हैं, ट्रैफिक वेबसाइट की करवाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, स्टोर की इंगेजमेंट, एप्लीकेशन के इंस्टॉल्स लाना चाह रहे हैं, कोई वीडियो उसके व्यूज बढ़ाना चाह रहे हैं, लीड्स जनरेशन करना चाह रहे हैं, मैसेजेस करना चाह रहे हैं, या कन्वर्जन, या कैटलॉग से, या स्टोर ट्रैफिक। सो आप सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से कैंपेन इस आप पॉपअप से आप सेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं जनाब। So once you select a campaign objective, you will be redirected to your new campaign creation screen. आप आएंगे, कैंपेन नेम, आपने नए कैंपेन का नेम दे दिया, फिर कैंपेन की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, ट्रैफिक, फिर आप जाएंगे नेक्स्ट के बटन पे। So notice there are the three levels of your Facebook campaign. First one is campaign level, second is ad set level, and third is ad level. So notice the blue highlighted text in the left sidebar. This let us know which level we are editing. We will work
on the first level, campaign. First, name your campaign over here. Select option for the buying type. Confirm the campaign objective type that's selected for this new campaign. Scroll down and select your budget. Then notice the blue highlighted text in the left sidebar. We are now editing the ad set level. अब हम ad set level को edit कर रहे हैं. अब target audience is equal to ad set. So scroll down the audience section on the ad set level. हमेशा audience जो होती है वो ad set level पे select होती है. Here, as you can see, the option for reaching your target audience are truly endless with Facebook ads. आप देख सकते हैं कस्टम ऑडियंस या फिर आपकी जैसे ईमेल लिस्ट होती है, लोकेशन, एज, जेंडर, लैंग्वेजेस, डिटेल डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, इन तमाम वेरिएबल्स की बेस पे या इन तमाम टारगेटिंग ऑप्शन की बेस पे आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं. इसको वन बाय वन आप लर्न कीजिएगा. कस्टम ऑडियंस क्या होता है, लोकेशन किस तरह से, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप इसको इजीली सीख सकेंगे और इजीली आप इसको अप्लाई भी कर सकेंगे. नाउ ऑडियंस मीन who sees your ad. So the audience section of your Facebook ad campaign enables you to show your ads to the people you think will care about your brand. The two basic types of audience are specific audience and broad audience. So targeting a small niche group of people, potential ad reach between 1000 and 1 lakh via strict parameter at nearly every option available under the audience section of your Facebook ad creation. So specifically बस आप जब specific आप टारगेटिंग कर रहे होते हैं या ऑडियंस होती है तो उसमें आप एक स्मॉल निश ग्रुप को टारगेट कर रहे होते हैं. ब्रॉड में टारगेटिंग अ मच लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, potential ad reach can be more than 1 million. Facebook ad implement a machine learning algorithm and use a ton of data to optimize your campaigns for who is most likely to click your ad. So just because you have a broad ad with a potential reach of 1 million plus doesn't mean Facebook will serve your campaign to 1 million people. So Facebook is using its algorithm to find the best user for your budget. So they want your ads to succeed, so you keep paying them. So ऑडियंस लेवल पे हमने देख लिया कि दो टाइप्स होती हैं बेसिक ऑडियंस की, एक स्पेसिफिक एंड एक ब्रॉड. नोटिस योर टोटल एड कैंपेन पोटेंशियल रीच चेंजेस एट यू एडिट योर ऑडियंस. जैसे जैसे आप ऑडियंस चेंज करते जाएंगे आपका जो पोटेंशियल रीच है कम या ज्यादा होती जाएगी. अब डिटेल टारगेटिंग, अब हम डिटेल टारगेटिंग की जब बात करते हैं, इज वन ऑफ द ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शन. Facebook enables you to use the refine the group of people you ads are shown to. For example, user interested in dogs. So ये detailed targeting है. एक्सेस कहाँ से करेंगे, अभी हम एड सेट लेवल पे हैं, कैंपेन हमने देख लिया, अब एड सेट लेवल पे हम ऑडियंस सिलेक्शन कर रहे हैं. हमारे पास लोकेशन हमने देख ली, एज हमें समझ है, और उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में हमें पता है कि जो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डॉग्स हम उनको टारगेट करना चाह रहे हैं. So one interest I love to target is competitor Facebook page, because typically if people are engaging with my competitor's page, product or service, they will most likely to be interested in my brand, right? So but as you can see, not all Facebook pages are available in the search result, so you will have to rely on broader targeting. Now detailed targeting. Detailed targeting is broad audience example. Create a broad audience targeting your entire customer location, age and gender. Then create a custom audience of all users who clicked your ad and landed on your website. Finally, create a lookalike audience of this custom audience. Then you can create target in future ads for more targeted audience options. So this is how to use a broad audience to extract potential customers. आपने ब्रॉड ऑडियंस हमेशा उस वक्त यूज करनी है
जब आपका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आपने पोटेंशियल कस्टमर को निकालना है, उनमें से उनसे एक्सट्रैक्ट करना है। So Facebook ad targeting is basically you can really target your audience in multiple ways. So whether it's a location or demographics, we can target user interests such as hobbies and recent activity on research. So what do users do in their pastime? What is their career? What was their education? Target by college and schools even. We can target behaviors like what website are they searching and shopping in? What is their income level? What Facebook pages do they like? I love this targeting option because if there is a brand similar to mine, that is most likely it's my competition. So why not market directly to those people? See if you can pull some of those people ever to your brand instead. So what does your avatar or perfect customer do? Eat, like, use? It's like everything. So these are some Facebook targeting options. So with this course, you will not only learn how to advertise to all these different audiences, but also accuracy with affordability. I will also teach you about ROS, return on ad spend, and that means making your each dollar very attainable with Facebook ad. So whether this is your first or 500th Facebook ad, we will be teaching you tips on how to get the best results from each type of ad. So which lead to my final point, testing. अब हमने टारगेटिंग कर ली, हमें टारगेटिंग की समझ आ गई, डिफरेंट ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर कर लिए। अब आते हैं स्प्लिट टेस्टिंग की तरफ टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ एड आर अ वेरिएबल इज कन्वर्टिंग द बेस्ट विद माय ऑडियंस। सो लेट्स क्रिएट अ टेस्टिंग। सो टेस्टिंग में हम जाएंगे उस कॉलम्स पे। सो नोटिस ये वाला जो हमारा यहाँ पे कॉलम्स हैं, राइट साइड पे कॉलम्स, कस्टम्स एंड ब्रेकडाउन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सो नोटिस द ब्लू हाईलाइटेड टेक्स्ट इन द लेफ्ट साइड बार। वी आर नाउ ऑन एड लेवल। अब एड लेवल पे आके हम ये सारी चीजें चेंज करते होंगे। एट द एड लेवल वी विल बी क्रिएटिंग द एक्चुअल फेसबुक एड क्रिएटिव्स एंड कॉपी यूजर्स विल सी। सो एड लेवल पे हम सारी चीजें ऐड की चीज़ें ऐड कर रहे होंगे, जिसमें हमारी फेसबुक का पेज आएगा, इंस्टाग्राम का अकाउंट आएगा, ऐड सेटअप आएगा, इमेज, कैरोसेल, कलेक्शन, जो हमारे क्रिएटिव्स हैं और जो हमारे प्लेसमेंट्स हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पे कर रहे होंगे। सो इट इज़ ऑन दिस फाइनल स्टेप वेयर आई विल टीच यू द स्ट्रेटजीज आई यूज फॉर क्रिएटिंग actual Facebook ads that convert. So your goal is to create content, image, videos and text that your potential customer will want to engage with when they see your ad. So learn more about reaching your future customers and fans. This is your link, business.com, facebook.com/business/ads. So यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। So thank you so much. इसको लर्न कीजिए, इसको सीखें, इस पर प्रैक्टिस करें एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड शेयर योर लर्निंग विद मी। आप मेरे साथ इंटरेक्ट करें मेरे सोशल गियर्स पे, मेरे ईमेल पे, या आप ग्रुप्स में आप इंटरेक्ट करें। इंटरेक्शन से आप लर्न करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।